Entrepreneur Development Program here in the Kingdom College helps us peek into the mind of the entrepreneurs and understand how they think and feel. It unlocks our potential and gives us various new perspectives to look way into the bigger picture. With that said, today, from the Golden City, we have a man with a 24-carat smile and a heart of gold, with a strong ambition to conquer and expand the market of gold and diamonds, with over 35 years of experience in the field of business. Here we have somebody very, very huge, along our teacher, our source, our inspiration. So, my dear budding entrepreneurs, with a huge round of cheer, let's welcome the MD of MD Swarga Mahal, the man of gold himself, Mr. Sanjay, along with our roots, our source, our inspiration, the one and only Deepak, the Welcome to new season of next season of season 2 of EDP Masters with the most amazing entrepreneurs from various fields, and very excited because we are having it for the first time absolutely offline in the real world, and we have our esteemed guest today. It's very strange for both of us because we have never been so formal in all these years, and today we have to be very, very formal to, because for all of you it's a different world together. For me, it's a very different world together. So please, ladies and gentlemen, boys and girls, welcome the most amazing, more than an entrepreneur, I think a fabulous human being, a man made of pure gold. If there is something called 24 karat, if that is the best gold in the world, then he is born with a golden heart. And our journey goes way back, more than a decade right now. So couldn't think of anybody else to be the first guest of season 2 of EDP Masters. So only for your eyes, presenting to you Mr. Sanjay, MP from MP Savarnamal. We'll see how does this whole thing go, because on a virtual platform when we did on the Zoom, things are very different, and we all were nicely dressed upside, and, including him and including me. So this time it's going to be all exposed. So towards we'll have some discussion, very candid, straight from the heart. In fact, the most amazing thing about EDP Masters, those of you who have never been a part of it, none of us know anything. He does not know a single question, because all other interviews, when they take, they are being given these are the questions. In fact, there are times when the person who is going to come for the interview will actually give, only ask me these questions. Other questions I will not answer, pertaining to your personal life, or it can be family life, anything else. But I think I'm a much more real person, and we live in a real world. So not trying to share few things just because you're uncomfortable, awkward, does not make sense to anybody. Just talk good thing about you, and just to talk about only what you want to speak and not what actually the audience want to listen.
It's not which I come from that part of the world. My world is very straight, candid, real, raw. So the most amazing thing about all EDP masters will be every week we will have a session. It will be Thursdays actually. We'll have new entrepreneur for all of you from different fields. So those of you want to know how to make more money, because entrepreneurship is one, definitely serving the world, serving people, but more than that, to live life on your own terms, to be a lion in the jungle and not the lion in the cage. So it will give a lot of chance to all of you to peep into the minds of entrepreneurs and entrepreneurs who are. Uh, we should always have a benchmark where, initially I can reach there. Okay, it's like you straight away go and say I want to climb Himalayas or Mount Everest. शुरू होने के पहले जर्नी खत्म हो जाती है. Okay, so best is that you said, okay, let me go to the nearby hillock and let me climb on the weekends. Then you start your journey. It looks possible to climb that hillock. Then you decide, I think this is quite okay. Let's go to Nandi Hills. So because we are in Bangalore, so Nandi Hills is close by to all of us, because on the live we do not know where people are going to be. So Nandi Hills, you think Nandi Hills try karte hain. Then Nandi Hills look possible to you because you have climbed. After Nandi Hills, you would climb for Kumar Parvata, and like that you go. So I think to get an entrepreneur of who's straight away like Anish Grover or those people who are the Shark Tanks, getting them, you will think humse nahi hoga yaar. So when you have people whom you see around you, living around you, walking around you, and living an exclusive, absolute brilliant life, you think, ये मैं भी कर सकता हूँ. That is the idea of getting people from neighborhood, getting people from the world where you and me will see them daily, so you can learn a lot from their lives. And that is the whole objective of EDP Masters, to have new entrepreneurs. And today we have Sanjay. So I'll keep it very informal. कि स्टार्टिंग में जो इम्प्रेस करने के लिए बोला तो सब बोल दिया है. कीप इट वेरी सिंपल स्ट्रेट. Like how they ask in strange or typical interviews, आपको कैसे लग रहा है यहाँ पे आके? ये आपने बोल दिया दीपक, इतने फॉर्मल कभी रहा नहीं हूँ. तो अभी फॉर्मल में थोड़ा अच्छा भी लग रहा है. I would like to thank my mom, Deepak, who allowed me to come to Bangalore. That was the first thing I would like to share. That is what is. And coming here, being here with the students, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. Like I wouldn't have thought of speaking in front of so many students and being live. It is not so easy for me to come and speak in front of. ठीक है, बहुत पहले कभी सोचा होगा, लेकिन आज दीपक ने मौका दे दिया, तो थैंक यू दीपक, थैंक यू वेरी मच. एंड ये कॉलेज में आके मैं बात करूंगा, ऐसा मैंने नहीं सोचा था. ठीक है, अभी बिजनेस के हिसाब से आ रहा हूँ, वो अलग बात है, कोई भी हिसाब से आ रहा हूँ, तो ये एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू टू मेकिंग मी सो स्पेशल. थैंक यू दीपक, यू ऑलवेज मेड मी स्पेशल. So thank you so much. And बाकी तो भी आप कर दें. Why it is very strange, because he has never gone to a college. He has never gone to a college. Another strange fact to know, all of you, is he cannot write. He cannot write English. He only can sign. That's it. The only thing he can sign is his signature. That's it. He cannot write English. Whatever English he speaks, he speaks. Whatever you speak, he'll understand. He can't write English. So to tell all of you, if you're not doing well in education, it's okay. So the most amazing thing which you will learn from all this thing is to know that for you to become successful and rich, एजुकेशन है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है. Because we have a crorepati sitting down here, and we just had a talk last month we had a program, one day program, number one businessman, and he had made a target for himself for 700 crores. So his next target is going to be reaching the magical figure in his life is 700 crores, and right now he is close to a few.
right now he's close to few hundred crores. So 10th पास करके बिना इंग्लिश लिखने आने के बावजूद किसी और शहर से from small town, he come from KGF and he's a very famous place right now because KGF part 2 is coming in next month. So he come from KGF, the gold mines, man of gold, heart of gold. So you can come from a small town. You may not have been able to ever see a college in your lifetime, not able to write English, even a complete sentence, and you can still make few hundred crores. It's okay, right? So we all have scope in life. That's what best thing you'll find in all this EDP masters will be. You have tremendous scope in life. Next time when these people clap, no, I want you to show live में दिखा दो. They'll think how they will do in those. No, background में आवाज आता है बस बोल के. They will do recording. So show them we have a live audience here. Otherwise they will feel everything is nothing is realistic. Reality show. Nothing is real about reality shows. Everything is so manipulated. Everything is planned. But we are absolutely straight, raw. In fact, there is nothing in this. I was thinking there's some juice भी देंगे हमको. इसका भी खाली है, इसका भी खाली है. कोई बात नहीं. First time now we have all the mistakes in life. I think a lot of common things we both share. One, those of you who are online, my name is Deepak. Because कुछ लिखा ही नहीं है. वो Kingdom College is there, but my name is got hidden there. So those of you online, and if you have been, I've introduced to you Sanjay. I am Deepak, and my life is beautiful, and I stay on top of it because I work as worship. So. Those of you on live for the first time, I'm also the chairman of the Kingdom College. So and also know that I play multiple roles in life. Okay, we have a lot of common things in our life together. Both of us almost came at a similar time to Bangalore. I came from Pune in 2003. He came roughly around 2001, and he completed 20 years, 2 decades in Bangalore. 2 years he did up and down from KGF, and we also have today among us his pretty beautiful wife Sunita Bhatia also. So and she's one of the most amazing women you will see. And don't miss the diamond she has in her tooth. You people want to keep it somewhere, she has kept in the tooth. And it is a good idea of keeping diamonds in the tooth and other things. When income tax rate happens, you don't have to smile. At least some money you can save in life, right? Good. So Sanjay, coming to all these things. We have discussed, we had the first round of interview when we had last season in lockdown time. Lockdown. So it's been 2 years of lockdown, and a lot has changed. People have closed on the businesses. People have gone back to their homes. And then there are people like you. Okay, I will give the benefit of lockdown. Gold did great timing for the gold what happened. But that was not something which you people knew about it. ऐसा नहीं था कि अभी because lockdown हो गया तो हमारा धंधा बूम जाएगा. ऐसे किसको नहीं मालूम था. Because Ukraine war is happening with Russia right now. Nobody knew gold prices will skyrocket now. So it was like it just happened. Otherwise, before pandemic hit, and when you realize कि अभी lockdown हो जाएगा, दुकान बंद करना पड़ेगा, and your market is a retail market, and रोज का customer आना है, रोज का collection होना है. 2 साल के बाद में मालूम है, we did good business. That is different story. पर lockdown शुरू होने के पहले, उस समय जब मालूम है कि 2 महीने 3 महीना पता नहीं lockdown कब खत्म होगा, when it will get over, and इतने लोग काम करते हैं, इनका क्या होगा, उस समय का क्या फीलिंग रहेगा आपका? What will be your thought process कि अब पता नहीं, it is uncertain ना पूरा, तो उस समय दिमाग में क्या क्या खिचड़ी पड़ी, मतलब what was that thing, anything, I don't know what happened in your mind, because what happens inside, entrepreneurs are like ducks swimming in the water. ऊपर लगता है कि आराम से स्विमिंग कर रहे हैं, अंदर वैसे पाँव मारते रहते, इतना मारते थे, किसी को मालूम नहीं पड़ता है. Entrepreneurs are like that duck swimming in the water. So I saw you, we've been together,
ये चल रहा है, मस्ती है, ओके, बट अंदर एक चलता है तूफान चलता है ना, तो वो क्या था, वो तूफान था या आंधी थी कि वो ठीक है, वो व्हाट उस समय क्या लगा पैंडेमिक शुरू होने के पहले का वो सीन चाहिए कि मालूम पड़ा कि अभी कल से लॉकडाउन है, अभी पता नहीं दुकान कब तक बंद रहेगा, बिजनेस कब तक बंद रहेगा, कस्टमर कब आएगा मालूम नहीं है, उस समय क्या दिमाग में चला? उस समय ऐसा कुछ नहीं चला था दीपक, बिकॉज मालूम ही नहीं था कि क्या होने वाला है। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा हो गया कि मैं डैडी के साथ रह गया था, तो आई स्पेंड माई मैक्सिमम टाइम विद डैड। बट एज ए बिजनेसमैन वी वेर थिंकिंग अबाउट कि क्या कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर लेंगे, कुछ भी नहीं सोचा था। जैसे चल रहा है वैसे छोड़ दिया सेटल कि भी अभी सब चीज का सोचना होता है, रेंट का सोचना होता है, पेमेंट सोचना होता है, आगे उनको पेमेंट कैसा देना है वो भी सोचना होता है। लेकिन सबका एक ही हालत था, तो हमने इतना एक्चुअली अंदर से ऐसा नहीं था कि भाई अभी इमीडिएटली खोलना पड़ेगा, खुलने के बाद चलेगा नहीं चलेगा, कब खुलेगा नहीं मालूम, उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था दीपक। ऐसे अंदर से भी ऐसा कुछ नहीं था कि भाई क्या करेंगे, लेकिन मन में रहता था कि कब खुल जाएगा ताकि सब अच्छा हो जाएगा। बिकॉज बैकलॉग सबका रहता है कि भाई वो कैसे काम करेंगे, कैसे खत्म करेंगे, कैसे देंगे, वो एक ही था। बाकी अदरवाइज ऐसा कुछ अंदर से वो नहीं था कि जाके व्यापार कर ले, दुकान खोल दे, फिर इसको बात कर लो, उसको, ऐसा कुछ भी नहीं था। सेटल्ड था। और बाकी आपने जो एवरी डे का सेशन लेके वो एक चीज में दिमाग ही नहीं लगाया उस ड्यूरिंग द लॉकडाउन ऑल्सो एंड बिफोर लॉकडाउन ऑल्सो। इट वॉज नॉट लाइक कि भाई क्या करेंगे, ऐसा नहीं था। वो सिचुएशन ऐसा अंदर से नहीं था कि भाई हड़बड़ी थी या कुछ था। तो या तो फिर ऐसा होता कि आपके पास बहुत पैसा है, you have so much surplus की मालूम है 3-4 महीना भी दुकान बंद रहेगा तो nothing to worry about। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कल की तारीख में the boys and girls from the Kingdom College will become entrepreneurs, so what should be their thought process? ये जो अब जो मैं एकदम काम था, इतना कुछ सोचा नहीं था, ये जो रिलैक्स चीज है आपके दिमाग में, what that you very relaxed emotionally mentally, ये रिलैक्सेशन कहाँ से है कि ये मालूम है कि nothing to worry, 2-3 महीना खींच लेंगे, सरप्लस है। So in case tomorrow when they become businessmen, they start as and become an entrepreneur, should they have surplus? एक्स्ट्रा फंड्स होना चाहिए हमेशा, होना चाहिए तो कितना परसेंटेज होना चाहिए? हाँ, वो तो बहुत जरूरी है दीपक। कुछ भी ऐसा हम लोग हर बिजनेस में सोच के रखते हैं कि भाई ये एक चीज इतना कभी भी काम आने के लिए, कभी अर्जेंट पेमेंट भी देना पड़ता है तो भी एक रखते हैं कि भाई ये एक रहेगा कि उसका कभी फोन आ गया तो उसको देना पड़ेगा। और ये एक चीज रहता है कि भाई कल को अगर 2 महीना बिजनेस कम चला तो रेंट और इनको जो देने के लिए सैलरीज और घर चलने के लिए इतना अमाउंट एक रखना ही पड़ता है। वो हर बिजनेसमैन रखता होगा और रखते हैं सब जन। और वो डेली रूटीन वाले एकदम जो हैंड टू माउथ है वो नहीं करते हैं। बाकी सबका एक रहता है दीपक कि भाई अलग अलग जगह में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके रखते हैं तो उधर से किधर न किधर से रिटर्न आता है। तो ये जो लोग बोलते हैं कि बिजनेस पैसा नहीं है, पैसा नहीं, मतलब झूठ बोलते हैं बोलना पड़ता मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है, बोलना पड़ता है ऐसा नहीं है, लेकिन वो भी है कि भी फ्लो नहीं है। तो हर जगह से कितने महीने का कैश फ्लो होना चाहिए बैंक में या अपने पास में? अभी ये तो पैंडेमिक के हिसाब से देखे तो दीपक वो पता नहीं ऐसा कभी हुआ, बस मान के चलते कभी कुछ मार्केट ऊपर नीचे रहता है, कुछ भी जैसे अभी वॉर हो गया, ये होता है, तो ऐसी अनसर्टेनिटी जिंदगी में आती रहती है। तो एज एन बिजनेसमैन, एज एन एंटरप्रेन्योर व्हेन दे स्टार्ट, कितने महीने का कैश फ्लो उनके पास में हमेशा रिजर्व होना चाहिए? एटलीस्ट 6 मंथ्स का अगर सोचते हैं कि भाई आराम से चलने के लिए, दूसरा कुछ नहीं करके घर चलने के लिए 6 मंथ्स का एक करके रखते हैं तो हो जाता है दीपक। और जब तक इंडिया में लेडीज है तो साल भर तो चल सकता है दीपक उनके पास। हैप्पी वुमेन्स डे सुनता but I think that's a very valid point, especially in our country where women actually live by the name Lakshmi of the house, so they always have the funds, they always have the money, and all those people have ever doubt about women, do they have money or not? When we got this drama of demonetization, जब नोटबंदी हुई थी, बहुत पैसा बाहर निकला था घर से, so डब्बों में, and these people have lockers and safe vaults. Women don't have safe vaults and lockers, they have
चीनी का डब्बा, फिर दाल का डब्बा, उसका उधर वार्डरोब में किधर तो छुपा के एक पुतली बांध के रखा हुआ है. दे आर इनफैक्ट स्ट्रेंज इट इज, हाईएस्ट पैसा निकला था दीपक लेडीज से. है ना. All of you girls, you have great scope in life. Most of my questions will be from the perspective keeping in mind the entrepreneurs from the college, जो बनने वाले, जिनको business करना है. Sanjay grew up in KGF, born and brought up in KGF, and then 22 years back he shifted to Bangalore. एक geographical location से दूसरे location में आना, existing family business से बाहर निकल के अलग बिजनेस करो या सेम बिजनेस करो, टू कम आउट एंड डू, टू लीव पीपल with whom you have grown up, to leave the place where you have grown up fresh in a absolute new market. क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए मेंटली? एक तो होगा कि मेंटली क्या क्या ध्यान रखना चाहिए. दूसरा इमोशनल एक बर्डन होता है ना, कि मम्मी को छोड़ के जा रहे हैं, पापा को छोड़ के जा रहे हैं, बेस्ट फ्रेंड को छोड़ के जा रहे हैं. तो everything is going okay in KGF. Every business है, everybody is there, enough for all of you to earn and live life. तो ये डिजायर कहाँ से आता है? ये डिजायर बड़ा होने के इससे आता है दीपक, कि भाई बड़े सिटी में कुछ है, बड़ा बनना है, तो वो डिजायर आता है. वो कभी भी आता है कि भाई यहाँ स्कोप कम है. आजकल हम देखते हैं कि भाई अच्छा एजुकेशन होते हुए भी लोग बैंगलोर आ रहे हैं. तो उसी तरह पैसा कमाने के लिए भी आना पड़ता है, लेकिन उसके लिए बहुत सारा, आपने जैसे बोला कि भाई पेरेंट्स को छोड़ के आना है, तो वो बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम था मेरे लिए, कि भाई मैं पेरेंट्स को छोड़ के नहीं आ सकता था, बिकॉज वी वर वेल सेटल एज यू टोल्ड, एकदम अच्छा सेटल था. बट उसके बावजूद स्कोप देखते हुए, फ्यूचर देखते हुए, हम लोग ने मतलब 2 years आई हैड टू ट्रैवल एवरी डे दीपक. आई यूज्ड टू कम फ्रॉम KGF, गो बैक टू KGF. ट्रेन में खड़े खड़े भी जाते थे, मतलब वो फुट रेस्ट पे भी बैठ के ट्रैवल किए हम लोग, जाना आना, इन स्पाइट ऑफ हैविंग एवरीथिंग. बट वो सब चीज अगर सैक्रिफाइस करके या फिर करते तभी वो मिलता है. मैं वही कल ऐसे ही सोच रहा था कि मैं 800 मारुति 800 लेके लीला पैलेस में भी गया हूँ. आज BMW में भी जाऊंगा, अलग बात है, लेकिन उस समय में भी गया था. तो जो है वो सब चीज सैक्रिफाइस करनी पड़ती है लाइफ में. यू हैव टू सैक्रिफाइस लॉट ऑफ थिंग्स, पेरेंट्स को, ब्रदर्स को, फ्रेंड्स को. एंड आई वाज वेरी कनेक्टेड टू दैट प्लेस ऑल्सो. KGF से भी बहुत कनेक्टेड हूँ, फ्रेंड्स भी बहुत मेरे वहाँ KGF में हैं, और फैमिली से भी बहुत अटैचमेंट है. उसको सब छोड़ के आने के बाद में एक मुकाम पे जाते हैं दीपक. अभी सुनीता उधर रहती थी, मैं इधर रहता था. समकी तौशिक बहुत छोटे थे, 2 साल, मतलब तौशिक को तो मतलब पता भी नहीं था कि मैं, वो जब सोता था मैं चल जाता था उधर, जब वो मैं जाता था वो जगता था. उसके बाद उसको तो मालूम भी नहीं था कि कौन है संजय. तो वो सब चीज सैक्रिफाइस करनी पड़ती है. उसके बाद ऐसे लाइफ में ऐसे सबको, हर एक को ऐसा हुआ रहेगा दीपक, कि फर्स्ट इनिशियल स्टेजेस ही हैज टू, कि भाई इसको मेहनत करनी पड़ती है, सारी चीजें छोड़नी पड़ती है, बहुत सारे सोशल ऑब्लिगेशंस छोड़ने पड़ते हैं. उसके बाद इधर काम हो जाता है. और मेरे में तो क्या है दीपक, एक आई विल नॉट माइंड अरविंद को यहाँ थैंक्स बोलूं, तो मैक्सिमम चीज उसने देख लिया है, तो मेरा आना जाना भी रह गया और ये भी साथ में चला गया दीपक. फर्स्ट 2 years तो वेरी मच, मतलब यहाँ रहता था, यहीं खाता था, बाद में जाता था KGF. वो सब करते करते इधर तक पहुंचे हैं. वो उधर से आता है, लेकिन कि भाई बाहर दिखती दुनिया बहुत बड़ी है दीपक, अच्छी दिखती है, बड़ी दिखती है. आने के बाद ये भी करना पड़ता है. तो बड़ा बनने के लिए छोटे काम करने पड़ते हैं. ये ध्यान में रखो, because most of your parents are businessmen. You think straight away go and sit on the galla. बड़ा काम करने के लिए स्टार्ट पहले छोटे काम से करना पड़ता है. You should not feel anything less about doing some job, some work, because most of us feel कि, for example, even if his son would have joined his business, he would have to do basic work only करना पड़ता है. Somehow we have this notion कि for that you can go and join one corporate company, straight away go become MBA, become engineer, and then you apply for interviews, go for interviews, and then you get position, straight away you go with that.
cabin or workstation. But if you want to become an entrepreneur, if you want to become a very big entrepreneur, then you have to start small. You should not hesitate to have done small work. Sometimes you have to pick up own stuff. I have known not only him, I have few more students of mine who have been into business for 2 decades, 3 decades. I have seen them lifting sari stock on their head, carrying the sample, and going from city to city across the country. Today they are well set. Today they have big houses, big outlets, big retail outlets, big wholesale outlets, big factories. But बड़ा बनने के लिए छोटे छोटे काम करने जरूरी पड़ते हैं. You should not have any hesitation or shame in doing the entire thing. It's very important. For this I will, sorry Deepak, sorry. For this my dad used to tell Deepak, खुद के काम करने में शर्म नहीं आना चाहिए. He had everybody. उनके पास 20-25 जन थे काम करने वाले और उनके 5 बेटे भी थे. बट जब झाड़ू निकालने का काम होता था, अगर कोई नहीं कर रहा है, नहीं हो रहा है, तो ही विल कम एंड सी दैट के भी दुकान के बाहर वो झाड़ू लगा देते थे. बाकी अदरवाइज केजीएफ में उनका नाम है, समाज में नाम है, दुकान में मतलब वेल सेटल्ड. इन स्पाइट ऑफ दैट ही यूज्ड टू डू दैट. तो वो हम लोगों को भी है कि भी हमने कभी भी ऐसा देखा ही नहीं कि भी कस्टमर को कभी पानी भी देना है. पहले करते थे दीपक, कॉफी लाके देते थे कस्टमर को बाहर से. जब केजीएफ में बैठते थे तो बाहर से कॉफी लाके भी कस्टमर को मैंने पिलाया है. तो वो करते हैं, सब काम करते हैं. डायमंड सीखने के लिए जाते हैं दीपक, तो डायमंड असॉर्ट करते समय नीचे गिर जाता है, तो उनको झाड़ू देते हैं कि पूरी दुकान, वो जितनी जगह है, दे हैव टू बाय डिफॉल्ट दे हैव टू सी दैट के भी उसको झाड़ू पूरा लगाना पड़ता है. कॉफी लाते पहले हाथ में आते ही झाड़ू देते हैं. और वो ऐसा नहीं है कि भाई उसके पास कुछ नहीं, 2 दुकान 2 स्टोर उसकी ऑलरेडी होगी, उसके बावजूद ही हैज टू डू ऑल दोस थिंग्स. छोटे काम तो करने ही पड़ते हैं. करेक्ट. और झाड़ू लेने में दिक्कत कुछ नहीं है. यू कैन बिकम अरविंद केजरीवाल. So you can become the chief minister of a most amazing place called Delhi and now also in Punjab. So झाड़ू में ताकत काफी होती है. So you should not worry about holding a broom in your hand. A few lessons which we have learned from till now, what we have discussed, I'll just sort of nutshell the entire thing. For this of all of your lessons, and those of you are online also. He mentioned about Arvind. Arvind is his nephew, Arvind Dhariwal from Mulbagal. So those who eat Mulbagal dosa is from that place, and he's been a tremendous back support to him and very amazing person. He doesn't speak much, but nowadays he says he speaks. If you're Arvind there listening to me, one day I'll get you also here and make you speak right there. So look forward for Arvind. Nothing called my work, your work. There's nothing called my work, your work. There's work. Whoever has time and ability should do it. That's the thought process you should have when you're working for yourself, when you're working in the house, when you're working in the shop, office, factory, anywhere. You're your own business also. तेरा काम है, मेरा काम नहीं होता. There's nothing called your work or my work. There is work. Whoever has the time and ability should do it. You need 2 things to do the work. You need one time and you should have the ability. For example, when he says that his father is to never hesitate to even sweep the floors if the maids or house help will not, or the helper will not come. He has the ability to broom, and right now he also has the time. He should not hesitate to go and do it. And nothing called itera kaam hai, mera kaam hai. This one issue happens in families, it happens in relationships, it happens in office places. This is not my work. For example, if I'm standing on the reception of the Kingdom College, and let's say Varsha ma'am is not there, and if the phone rings, if I'm standing there, I have the ability to pick up the call and talk to who was there, because the person on the other side, it may be a father, it may be a mother, it may be a student wanting to have some inquiry about the admission, kuch bhi rahega. They don't care who's picking the call. They want information. Now, I cannot say I'm the chairman of the college, so I will not pick up the call. I'm standing there. I have the work is there to pick up the call. I have the time and I also have the ability. I should be able to pick up. I should not. ये तो मेरा काम नहीं है. वो तो वर्षा मैडम का काम है. No, that way you will not be able to do so much in your life. The moment you start discriminating between your work and my work, I'll tell you, you will never be able to accomplish a lot of things in your life. जिंदगी में, लाइफ में, फैमिलीज में, घर में, ऑफिस में, फैक्ट्रीज में, तेरा काम मेरा काम नहीं होता है. Whoever that moment has time and ability, he should do that. For example,
Vaishali is not keeping well. Vaishali is my wife. Not keeping well. I'm free in the house. It's Sunday, but I can't cook. I have the time, but I do not have the ability. I have to depend on Swiggy or Zomato and order the food from outside, or go and pick up the parcel from outside and do that. Vaishali cannot say, तुम इतना भी काम नहीं कर सकते, नहीं कर सकता, मेरे में ability नहीं है. So nothing called your work and my work. There is work. Whoever has time and ability should go ahead and do it. काम का फर्क नहीं पड़ता कौन कर रहा है, काम हो जाए ये बहुत जरूरी बात है. This is one lesson which we learn about this book right now. Number two, when I asked him about moving from KGF to come to Bangalore, you have to leave a lot of things and come. You have to literally lose. It's not even the fear of loss. You have to lose. You know, you'll not meet your parents, you'll not meet your friends, you'll not be in the place. Now, all of us have addas, no? Kattas are there. Every evening, hum milte hain wahan pe, and suddenly, you know, you will not be able to see your friends. There's so much to lose. There are two things in life which we have to understand. One is fear of loss, and one is desire to gain. How to overcome fear, or how to happily accept the loss. When the desire to gain is more than the fear of loss, you will have the motivation to go through the loss. Only when the desire to gain is bigger than the fear of loss, जो मैं पाने वाला हूं वो मैं खोने से ज्यादा बड़ा है. जब ये फीलिंग आती है ना, तो आप कोई भी चीज का नुकसान उठाने के लिए तैयार हो जाते हो. So that is how an entrepreneur thinks. There is something he is willing to lose, something bigger to gain. Those people who do not have the mindset, कुछ नहीं खोना है जिंदगी में, वो कुछ बड़ा पा भी सकते नहीं है. So you will have to build up this mindset कि कुछ बड़ा पाने के लिए कभी कभी कुछ छोटा खोना पर तो चलता है. And you should let it go. That when will it happen? आराम से, when you know the desire to gain is bigger than the fear of loss. When you have that, I think it won't be difficult. But if you are not able to move forward, नहीं इतना खुश होना पड़ेगा. You are not seeing the larger picture. क्योंकि 2-3 साल के बाद में, today he still has the KGF friends, he still has the KGF people, he still has his world there. He also has built another world in Bangalore, which is larger, bigger, beautiful, more beautiful than what it is in KGF. So because of the 2 to 3 years of transition period, where he lost a lot of things, maybe temporary, but now he has 2 worlds. In letting go of one world temporarily, he is able to build two worlds. That's what you'll have to understand. It's not that you let go this and you can have both the worlds with yourself. That's what is possible in the entire thing. So these are the few lessons which we have learned till now, what we discussed right now. I think we are going strong. So we will have sessions on question and answer in case you have some doubts, even if they're silly doubts. See, what happens, I also can answer. But for all of you, ये तो टीचर है तो ज्ञान बांटते हैं, तो फ्री में मालूम, तुमको क्या मालूम है रियल में क्या होता है. तो आई हैव रियल पीपल नाउ. ओके, फॉर देम इफ यू आस्क, आई एम द मोस्ट रियलिस्टिक पर्सन. इससे मोर प्रैक्टिकल पर्सन नहीं मिलेगा. बट फॉर यू, वो क्या घर की मुर्गी दाल बराबर. They are so lucky enough. They are so lucky enough. You have Deepak with you. It is not talking in front of Deepak or because I have always seen people sharing from Kingdom College. They are the best, and you have Deepak. I know for 20-25 entrepreneurs who are getting trained with Deepak. You name it, they are all there. All the businessmen. Everybody is like who's who of Bangalore today. We are paying 1 lakh rupees per year for 12 sessions, 12 days, and with tax, that is we are paying to Deepak, number 1 businessman program. And you are getting it here probably free of cost, or so you are lucky enough to get Deepak. And it is घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं है. घर की मुर्गी बहुत कुछ है, ये मुर्गी नहीं है. तो ये ऐसा मत सोचना आप. And because see, sitting here I am learning so many things. So for you it is every day's affair. So you are very lucky, and you can share this probably whenever you need this. ये जो बिजनेस प्रोग्राम अभी आपने लिया है दीपक, ये प्रोग्राम इनके लिए कभी भी लाइफ में काम आएगा, कभी भी काम आएगा. बिकॉज आपने जो भी सिखाया है वो हमको कभी ना कभी काम आया है. ठीक है, हम लोग उधर से जो सीख के आए थे उसमें जो
करके जो बड़े हो गए हैं, तो इनके लिए तो अभी फाउंडेशन भी स्ट्रांग हो गया दीपक। हमारे लिए तो ठीक है, उधर का फाउंडेशन अच्छा था, भी फैमिली फाउंडेशन था, पहले जॉइंट फैमिली था, अंकल से सीखते थे, इससे सीखते थे, दोस्त से सीखते थे, फैमिली से सीखते थे। अभी ये न्यूक्लियर फैमिली होने के बाद में अगर नहीं सीखते तो इधर है कॉलेज में सब कुछ सीखने को मिलता है, आपको एंटरटेनमेंट भी है, साथ में लर्निंग भी है, और हर चीज का लर्निंग है, लाइफ के बारे में भी लर्निंग है, बिजनेस के बारे में भी लर्निंग है। तो आप अभी सोच लीजिए, यू सी हु इज लर्निंग फ्रॉम दीपक एंड यू आर गेटिंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट, so they are lucky enough to have you, Deepak. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. So, just to remind all of you, on live also we are on EDP Masters this time with Mr. Sanjay MP from MP Swarnamal, and we're exactly in the middle of the interview with Sanjay. So we'll take a short 5 minutes break only on live. We will have a small casual talk here. So people on the live, just be tuned in with us for next 5 minutes break. It's exactly 12:37 and 12:42. We'll be back on live. In the meantime, some nice cute video promotions videos to all of you, some presentations. Enjoy the whole thing. In the meantime, we'll have some casual chat with Sanjay, and some students also is there. So that part we will not be able to share with you. Sorry, but back in next 5 minutes. Stay tuned, stay connected. Thank you so much.
So welcome back to EDP Masters. This time with Mr. Sanjay, and I've just got his beautiful, pretty, exciting wife Sunita. She has a diamond in her. I don't know, but I'm very excited about this from the time I have seen. She has gold also in her tooth. I don't know how much carat is there, but ये भी है. I think it's supposed to be a nice investment, safe investment. Everything else can be stolen, can be raided. This cannot be taken. Chance ही नहीं है. 24 carat. Oh. 824 carat, 824 24 carat. carat. So much gold she has. So we had some nice, beautiful, fun moments in between when we had the break, which you people missed. But it's okay. Online people missed. You people. So this for you. Just few more minutes. You have seen his journey from KGF to Bangalore last 22 years. How much a wife has to go through? He has बड़ा picture, बड़ा काम करेंगे, बड़ा बिजनेस करेंगे, नाम होएगा, काम होएगा, इतना कुछ होएगा. इसके लिए छोड़ के जा रहा है. टेम्पररी सही छोड़ के जा रहा है. But what you as a wife, when you have small little kids, because that's what tomorrow maybe these boys and girls also will have to face. Maybe the boys, as Sanjay, they have to move to some place, or maybe the girls who are going to be married to an entrepreneur, businessman, and they might be in a situation where you were there. तो उस समय पे कैसा सोचना है? You can also be a hindrance, no? क्या जरूरत है? Why you need to go? But बैठा बैठा बिजनेस है, क्या छोड़ के जाने की जरूरत है? क्या इतने लालची हो गए क्या? कितने ग्रीडी हो गए क्या? ये सब होता है दिमाग में, and especially women by nature very insecure कि कैसे होगा यहाँ पे, and you are like not completely set in the family also. So how a woman as a wife should manage when a husband as an entrepreneur goes out for a bigger purpose to be taken? In this case, because एक family support होना बहुत जरूरी है. My brother-in-law was very, very supportive. And in case Sanjay didn't wanted to shift to Bangalore, he was very attached to. Even I am from KGF, born and brought up in KGF. But the way Sanjay is groomed in KGF and the attachment what he's got in KGF, इतना होया, मेरे ससुराल आई तभी मैं भी तो इतना KGF. He don't know Sunita, we will not shift. I had this opportunity of permanent help. मैं बोली let's go Sanjay, आपका अच्छा हो जाएगा. We will dream big about it. Then Sam got attached था. Sam used to miss Dad. It was very difficult for me 2 years to manage without Sanjay, but I know I will get something big out of it. And all my 4 sisters, my brother-in-laws, my mother-in-law was the gem of the person. I really miss her, and gratitude to her, the way she is trained Sanjay and proved it. So family support की वजह से till now I have reached here even. And I used to support him. हो जाएगा करके. रात में लेट आता था. I used to wait for him. खाना खिलाती थी. वापस सुबह जल्दी उठना था. मैं संजय बोल रही थी निकल जाता था. But अभी वो सब दिन गए different. Today we live happy life and always top of the world. And एक लेडी को थोड़ा sacrifice करना जरूरी है. You get थोड़ा sacrifice, you get big out of it. बहुत बड़ा मिलता है थोड़ा sacrifice करते हैं तो. That's the last question before you go from here. As an entrepreneur, आपको इसमें सबसे बेस्ट क्या लगता है? As a businessman, as an entrepreneur. He's very genuine. इसका दिल बहुत साफ है दिल. And किसी को ना he will always give right सलाह. इसको ये नहीं बोलेगा कि तू ऐसा कर वैसा कर. He will always tell कि मतलब उसमें तेरा अच्छा होएगा ना वो काम तू कर. And you grow big. वो कोई भी है एक दुकान का स्टाफ होएगा कोई भी होएगा. You have to grow big. This is a very good quality in him and very very genuine by heart. बहुत दिल साफ है इसका. और इसलिए मेरे को मिला मैं इसको
thank you so much for joining on this interview with Sanjay. It was a nice privilege to host you here for the. So please take your seat. Thank you very much. Thank you, sir. My microphone. Thank you so much. Yeah. So guys, if we can have now we can welcome back to EDP Masters with me. Sanjay, you mentioned about when Ravindra Pal Singh asked कि अभी आपने नेक्स्ट टारगेट रखा है 700 करोड़ का, ये 7 का फिगर क्यों, 500 क्यों नहीं, 1000 क्यों नहीं, तो आप बोले कि मेरा 7 लकी नंबर है. तो इन बिजनेस में एंटरप्रेन्योर्स बनने के टाइम पे ये सब जो लकी नंबर, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, ये कितना दिमाग में चलना चाहिए या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इनिशियली नहीं होता है दीपक, एक स्टेज में आने के बाद में, दैट इज व्हाट आई पर्सनली फील, एक स्टेज में आने के बाद में कभी कभी वो काम कर जाता है. बिकॉज माई डैड यूज टू टेल कि भाई 10 पत्थर मारते हैं तो एक लग जाता है, तो वो जो लगता है ना उस समय में वो दिमाग में बैठ जाता है. तो वो एक टाइम आने के बाद में फॉर श्योर पहले मेहनत करते रहते हैं, वो काम होते रहता है. उसके बाद में अगर एक स्टेज पे आने के बाद में वो नंबर को या फिर वास्तु को या फिर टाइम को बहुत ज्यादा भी उसमें जाना राइट नहीं है. पर बहुत ज्यादा चले जाने से बिकॉज वी बिकम के भाई वंस वी स्टार्ट बिलीविंग समथिंग एल्स यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस इन यू, दैट इज द बिगेस्ट लेसन व्हाट. तो बाकी ये चलते रहता है. उसके एक लेवल के आने के बाद में वो थोड़ा थोड़ा मैटर करने लग जाता है. समवेयर इट प्लेज इन योर माइंड, ये मेरा लकी नंबर है, ये दिन में मैं ये काम करूंगा, ऐसा मैं करूंगा. वो एक टाइम में आने के बाद में, एक पोजीशन में आने के बाद में आदमी सोचता है कि ऐसा कर लेंगे, ये दिन को स्टार्ट कर लेंगे या फिर ऐसा फेसिंग में बैठेंगे, ऐसा करेंगे. वो सब एक पोजीशन में आने के बाद में वी हैव सीन पीपल डूइंग दैट. बिकॉज नॉर्मली कहीं जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, बिजनेस के हिसाब से जाते हैं, तो पीपल हैव दैट कि वो एक स्टेज में आने के बाद में, उसके पहले तो लेफ्ट राइट सेंटर सब जगह से उनको खाली काम ही करना होता है, वो सब दिमाग में नहीं होता है. एक पोजीशन में आने के बाद में वो आ जाता है. और समवेयर दिस आई हैव दिस कि भाई जुलाई का बर्थ है तो 7 का थोड़ा लकी नंबर 25 है, वो एक लेके चलता हूँ. और ये नंबर 1 बिजनेसमैन प्रोग्राम में ऐसे ही एक फिगर सोच लो और फिर बोल दो, you see it and then show it to the world, that will happen. So that was the lesson there, and then I have seen and I will show to the world. That is what I thought. So that is why I have shared this number. Thank you, Deepak. Thank you so much. So the lesson for all of you is that ki start see if you get into this trap of lucky number, muhurtam, a good day, bad day, auspicious day, very difficult. I remember one Nigerian coach telling to people from Nigeria who wanted to come and do business if you're going to do business in India, one small advice to you is, in India time is not precious, it is auspicious. You tell in India कि आज का दिन auspicious है, सब आ जाएंगे. Tell everybody to come on time, nobody will come. Auspicious मुहूर्त है, everybody will come on time. So you keep in mind a trick. If you want people to come or customers to come or market to come for your office opening या किसके लिए आएंगे, तो चल ये auspicious time है, जो इस time पे आएगा उनका भी धंधा बड़ा हो जाएगा. And that will play on the mind of people. But I think that's one crazy thing which happens in every. But that is one very beautiful point what you said, which I like it. Start से नहीं होता ये. When you look back and you realize ये मेरे लिए काम हुआ है. This all has worked for me. These people, somebody becomes a lucky charm for you. Somebody becomes a lucky basket for you. Start से नहीं होता है. But once you see few years down the line, यार ये time पे, इस दिन पे, उस बंदे के साथ में मेरा काम बन जाता है. So something this connection happens. It should not play on your mind because it makes you stay. The beautiful lesson which you also have to pick up, learn here is because this will play on your mind because we come from a country where all these things matters a lot. For example, all of you are all 17, 18, 19, 20, 21, okay, bracket. 99% of you will not believe in astrology and vastu. ये सब कुछ नहीं होता. ये कल सिखाया तुमको मैं कुछ तो भी इस पर क्या सिखाया तुमको? ठोकोफिकेशन. जब ठोकोफिकेशन होती है ना, जिंदगी ठोकती है ना, तब भी सभी आदमी आते हैं. So when life is going smooth, business is going smooth on high, this thing doesn't matter to us.
we think about astrology, we think about vastu problem, we think about this gemology, numerology, all these analogies जो आता है ना, कब आता है? When you start having a fall, when there is a fall starting for you, or you have back-to-back setbacks, when you start having back-to-back failures, when you're on the downfall, that is where people go for all these things. Then you start with God, temple, Guruji, Prasad, Vibhuti, Tabiz, mantras, all these things. So it's a very tricky. So in case when you start getting into this trap, one thing is very clear in your mind, you realize somewhere you're losing confidence. So you want to borrow confidence from outside. So one signal that will give that you have to remember is the moment your mind starts thinking, I think my time खराब चल रहा है, yeah, I think I should go to an astrologer, or I think I should check the dates and start the business. I should get a vastu consultant for the entire thing. एक बात पक्की है, आपका mind weak हो गया है. The mind has become weak. What I like about youth, especially this age which you have, is बिंदास है हम. Because nothing to lose, bro. क्या होगा? कुछ है ही नहीं खोने के लिए. So that is a strong mind. So lesson which you have to learn is when you have this thought process, nothing to lose, your mind is very strong. And when your mind starts looking for all these things, your mind has become weak because you're losing a lot. So at every junction of your life, as an entrepreneur or as a human being, whatever you play, if you can live with this, nothing to lose. When you have this mindset, nothing to lose, then everything to gain. But क्या होता है? After one phase, when you reach somewhere, you start seeing I can lose a lot. That is where you start becoming weak. So when you feel weak, when your mind becomes weak, when your mind starts counting what all you can lose in the process, mind becomes weak. Initially, there's nothing to lose, so your mind is very strong. देख लेंगे नया सिटी तो क्या होगा, मैं एक्चुअली घर पे आ जाऊंगा वापस. So your mind is like you think you can do anything in life. That mindset, if you can maintain all your life, by how do you do that? Staying detached from the results. जो business हुआ है, without looking at the bank account, without looking at the customer कितना आ रहा है नहीं आ रहा है, you focus on your process, focus on the work, focus on the work, focus on the work, and you keep focusing on the work. How you did when you came for the first day in the business, nothing to lose. If that is what attitude you have all your life, a lot to gain or everything to gain in life. The moment your mind starts looking for these kind of things, vastu, astrology, rings and all these things, I'm not saying it is wrong or right. I'm talking about a mindset. How a mind of an entrepreneur starts weakening. It starts weakening when you realize you have something to lose, a lot to lose. And when a mindset has nothing to lose, the very strong mind is very strong. I'm not saying if mind has become weak, then you need support. If you think by going to an astrologer will make you feel confident, okay, go. But don't depend on him or her. You want to take the help of astrology, gemology, numerology, take help. But don't become dependent. Because I have seen people, I have known people, he knows, I know, to do everything they will check. To do everything, they will check. That is why today I chose 11th of March to start EDP Master, because maybe number one, maybe number one, maybe Leo, maybe Leo. So let's have one. And 2 once become 11, let's march in the March. So we start the March first today only. So that's how you use the mind to link the entire thing to find strength from outside also. That's how you do it. Okay, anyway, coming to a few questions from my end. बिजनेस दिल से करना, दिमाग से करना, ये फाइट एटर्नल है हम लोग के लिए. बिजनेस नॉर्मली दिमाग से होता है दीपक. मैं दिल से करता हूँ वो अलग बात है, लेकिन दिमाग से होता है. बिजनेस तो दिमाग से ही होता है. हम क्यों विश्वास करें? अभी इतना आपने पैसा कमा लिया, इतना नाम कमा लिया. You have been appointed as directors of associates of jewelries and you have been looked up to by people. You live a lavish life. ये मजा करते हो. दिल से इतना होता तो हमको दिमाग लड़ा है फालतू में. Correct? No. Why should we trust you then? दिल से तो करना है बिजनेस. मैं दिल से करता हूँ तो मेरे को लगता है कि दिल से ही करना चाहिए. दिल से करने से सामने वाला का भी ग्रोथ होता है, अपना भी ग्रोथ होता है. वो एक पॉइंट मेरे में बहुत स्ट्रांग है
कि उसका भी ग्रोथ होता है। हम लोग जब कुछ देते हैं दीपक, तो उसको वही प्रे करके देते हैं कि भाई आपके घर में ऐसा बहुत आए और आप यहाँ आते रहो। बिकॉज मैं सोना देता हूँ तो उनको बोलता हूँ कि भाई आपके घर में बहुत ऐसा आता रहे, और तो वो दिल से ही आता है। वो दिमाग से अगर जिस दिन आना शुरू हो गया तो फिर दिमाग चलने लगेगा, तो वो कभी भी नहीं आया और वो आएगा भी नहीं दीपक। तो दिल से ही करते हैं हम लोग बिजनेस, और मैं तो दिल से करता हूँ, और दिल से करने के बाद सक्सेसफुल हूँ तो वो आपने जैसे बोला तो भी आई विल ऑल्सो टेल के भी दिल से ही करना चाहिए। बाकी कैलकुलेशन दिमाग से करते हैं दीपक, अलग है कि भाई कैसा लाना, क्या करना है। टेबल पे बिजनेस करते हैं तो दिल से ही करते हैं दीपक, वो दिल से करते हैं। बाकी दूसरा सब चीज है कि कौन सा बिकेगा, क्या लाएंगे, क्या बनाएंगे, क्या बेचेंगे, वो अलग बात है, वो दिमाग से होता है। बिजनेस जब करते हैं तो उसमें दिल लगता है, तो वो ज्यादा भी होता है और अच्छा भी होता है दीपक। Correct. I'll try to just give a little more input from my side on the entire thing. Very rightly you said. To give it in words which all of us can understand. Except people, जहाँ पे लोग आते हैं उसको छोड़ के हर जगह पे दिमाग लगाओ. Apply your mind everywhere where there are no people or where there is no person. Moment there are people involved, stop the mind, use the heart. I'll explain to you. To buy things. Is person involved there? No. Use mind. ये क्या है? Think. ये दिमाग से खरीदना. ये दिमाग से खरीदना. You are 17, 18, 19, 20-year-old. What do you need in mobile? Incoming, outgoing, message, WhatsApp chat, photo, library, some music app, some games video. और क्या चाहिए तुम्हारे? Nothing. Any mobile is okay ना? पापा मेरे को iPhone प्लस ही चाहिए. तो दिल की बात कर, दिमाग की बात कर रहा है. दिल की बात कर. Wrong move. An entrepreneur, if you want to become a successful entrepreneur, what is he spoke the half part. I'll tell you both the parts to you. जहाँ पे लोग आते हैं वहाँ पे दिल, जहाँ पे लोग आते हैं वहाँ पे दिल, जहाँ पे लोग नहीं है, चीजें हैं, मोमेंट्स है, प्लानिंग करना है. प्लानिंग डन बाय हार्ट और माइंड. प्लान वन इवेंट, माइंड और हार्ट. माइंड. You have to meet a customer, talk to your colleague, talk to your employees, talk to your boss, talk to your driver, talk to your maid servant. जहाँ पे भी लोग हैं, दिल. Remove the people. What is left? Use your mind. Business plan, mind. Strategy, mind. Planning, mind. Logistics, everything. जो भी everything where people are not involved. Mind. Moment there are people involved, forget the mind. We do exactly ulta. We'll give visiting card to the person जिसको अपने से काम है, जिससे अपने को काम मिलेगा. We'll shake hands. और ये काम का आदमी है. Now you want to go and build friendship with the person, not because you want to build relationship, because you think इसमें मेरे को फायदा है. That's where you really have to. Excuse me. That's where you'll have to train yourself, or you'll have to really empathize yourself to understand. लोगों के साथ दिमाग लगाना नहीं चाहिए. A lot of people make that mistake. They might get temporary advantage, temporary benefit, but in long term, the other person will know. ये मेरा इस्तेमाल कर रहा है. He is taking the advantage of my relationship with the person, and you will lose the relationship for a lifetime. So business, you should do with both mind and heart. When it is people involved, use your heart. When remove the person, what is left in that, use your mind. Very important point. Second he said was, दूसरे का फायदा होना चाहिए, तब जाके उसका भी ग्रोथ होना चाहिए. And the most amazing way of doing any kind of business, if it has to be long term, is you win, I win. It is not called I win, you win. First you win.
and in the process I also will win. When you have this domain or this frame of mind and this frame of emotions कि जो भी कर रहा हूँ बिजनेस या जो भी डील कर रहा हूँ उसमें आगे वाले का फायदा होना चाहिए, उसके बाद में मेरा भी फायदा होना चाहिए, प्लीज ऑलवेज एंटर इनटू दैट डील ओनली. नेवर एंटर इनटू ए डील where other person will lose and you will make money. Never get into a business like that. I'm talking from a materialistic world also and from a spiritual angle also. जिस धंधे में, जिस काम में, जिस बिजनेस में सिर्फ आपका फायदा होगा, आगे वाले का फायदा नहीं होगा, don't get into the business. Long term में you will not make money, you will not make success. और only उसका फायदा होगा, मेरा फायदा नहीं होगा. Not worth it. You also win, I also win. You will feel a lot of satisfaction in that work. As a strategy, you might do that. Like how the Zomato does, Swiggy does, cashback, first free. They're doing it because they want to get entry into. As a strategy, first deal is okay. मैं free में कर देगा आपके लिए. Okay, I'll give cash back to you, or I'll give it extra discount to you. I will lose right now to gain you. Oh, first time ठीक है, but you can't do for lifetime, right? After one time, everybody is going to pay you, will charge you for the entire thing. So always work from the domain of you win and I win. Sanjay साहब, जॉब में ना 9 to 6, 9 to 7 काम होता है. Every month end salary will come. So you are more focused only about your role. I'm a computer operator, I'm an accounts guy, I'm an HR manager. उतना ही काम करने जाना है. As an entrepreneur, सब कुछ देखना पड़ता है. Everything you have to see. So, it 24/7, 365 days, ये चलता रहता है. कैसे इसमें, how to find peace in this? Because work life में ये लोगों की हालत खराब है. मतलब जो लोग जॉब करते थे only come and ask, Deepak, can you please help me? I'm not able to manage my work and my family. I said, you're only having one role as a salesman or a marketing guy or a brand building guy, or you are an accountant, and then you have a family. उतना ही है. Think about the boss, entrepreneur. उसको सब देखना है. Every 10, 15, 20, 100, 200 employees, उनका salary देखना है, सेल्स देखना है, बिलिंग देखना है, परचेज देखना है, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन, सब देख. वाइफ को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, सोशल सर्कल है, फ्रेंड है, ये सबको देखना है और रोज देखना है. You want to be an entrepreneur? नहीं ना. तो कैसे करना? क्योंकि what people see is the life of an entrepreneur. You drive in BMW. Okay, you खतरनाक ड्रेसिंग ब्रांडेड कपड़े आप लोग पहनते हो, कभी भी जाते हो, कभी भी आते हो. हाँ, मतलब शेर घूम रहा है जंगल में ऐसे खुला, और सब नमस्ते नमस्ते करते हैं. तो वो जो when people see this, no, क्या लाइफस्टाइल है यार, अपने को भी बनना है ऐसा. तो उसका पीछे जो मैं बता रहा हूँ, ये देखते नहीं लोग, झाड़ू के मारना पड़ता है कभी कभी. वो पहले सब किया है ना दीपक, पहले 2 साल, 2.5 साल, 3 साल वो करना जरूरी है, तब जाके ये आता है. बट सब चीज हैंडल करने के लिए यू शुड हैव दैट कैपेसिटी. मतलब अभी वो देख देख के सीख लेते हैं दीपक. किसी को देखते हैं भाई, अपने से आगे वाले कौन है, उनको देखते हैं कभी कि भाई वो सब कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, वो कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ. तो वो देख देख के सीख लिया कि वी हैव लर्न फ्रॉम देम ऑल्सो. लॉट ऑफ थिंग्स अपने में भी रहता है दीपक. कोई ना कोई एक हुनर बोलो या फिर वो रहता है कि भाई मल्टीटास्क या मल्टी टैलेंट रहता है. फिर देख के सीखते हैं. भाई आप देखते हैं, आप 4 चीज, 5 चीज, 10 चीज कर लेते हो, तो वो भी देख देख के सीख लेते हैं कि भाई ये भी हैंडल हो जाएगा. एंड थोड़ा हर चीज में, बिजनेस में तो नॉर्मली क्या होता है दीपक, भरोसा कर लेते हैं कि वो काम उसको दे दिया तो वो कर लेगा, वो काम उसको दे दिया तो वो कर लेगा, ऐसे करते करते. बट इनिशियली यू हैव टू वर्क फॉर एवरीथिंग. हर छोटी चीज के लिए अकाउंट्स भी अपने पास रहेगा, पैसा भी अपन को हैंडल करना है, परचेज भी हमको करना है, सेल भी हमको करना है, दुकान भी हमको खोलना है, शटर भी हमको ही उठाना है, सब हमको ही करना है. पहले इनिशियली एक थोड़े दिन करना पड़ता है, उसके बाद में मालूम पड़ते कि भाई वंस यू बिकम मास्टर इन इट, देन यू नो हाउ टू हैंडल इट. क्या करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए. तो वो बाद में आ जाता है दीपक, वो धीरे धीरे आ जाता है.
और मालूम है कि भाई इधर आइस रख के ही काम करना है। हर बार ऐसे होता है कि सर पे आजकल तो ऊपर नीचे रहना पड़ता है। तो वो हो जाता है बस। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बट इनिशियली यू हैव टू वर्क फॉर इट, यू नीड लाइक लिटिल टाइम। उस समय में हमारा वो टेम्परमेंट चेक भी हो जाता है कि भी उधर से पेमेंट नहीं आ रहा है, सामने वाला पेमेंट पूछ रहा है, वो प्रेशर हैंडल करते करते घर जाओ तो उधर इशू हो जाता है। स्टाफ काम करते करते इमीडिएट छोड़ के चले जाते हैं, सब चीज का एवरीथिंग, मेन स्टाफ चला जाता है और यू नो यू आर डिपेंडेंट ऑन। तो उसके बाद में सब पैरेलली एक 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 सेकंड लाइन करते 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 आ जाते हैं। तो इनिशियली यू हैव टू वर्क फॉर इट एंड लेटर देख देख के सीख लेते थे। तो किसी को देखा उसने वो काम किया, उसने वो काम किया, वो देख के सीख लेते हैं। So basically, what you have to pick up from what they said is you should have more expectations from yourself than other people, so that क्या है तूने ये काम नहीं किया, if you are not who will do it, you only have to do it. So ultimately the buck stops with the boss, it stops with you. So you should have the thought process कि I should have more expectation from myself than everybody else, because किया तो अच्छी बात है, नहीं तो अपने को झगड़ा करना ही पड़ेगा. You should not get disappointed, then only you can maintain that peace, otherwise you'll be very miserable about the entire thing. Sanjay, last couple of questions now. What would have been your, I want two things, the weakest moment of you when you're in business? मतलब आप ऑलमोस्ट मोम की तरफ पिघल गए थे, इतना वीक हो जाता है आदमी। तो ऐसा कुछ मौका, ऐसा कुछ जिंदगी ने मेरे को दिखाया रहेगा बिजनेस में? और एक द स्ट्रॉन्गेस्ट वेन यू लाइक ए स्टील, मोमेंट ऑफ स्टील जो बोलता है कि मैं देख लेंगे, एक बार भी अपन ऑलमोस्ट वी बिकम सो वीक कि लगता है कि अभी खत्म हो जाएगा, मतलब यू डोंट सी द नेक्स्ट डे, एंड देन देयर आर आल्सो मोमेंट्स, उससे भी डिफिकल्ट चीज आई रहेगी, बट यू फील वेरी स्ट्रांग। तो ऐसे कोई दो जिंदगी के कुछ मौके आपके शेयर विद देम, दे आल्सो विल हैव सम मोमेंट लाइक दैट। मौका ऐसा तो कोई भी आया नहीं जो कि भाई एकदम मोम की जगह तरफ पिघल गया। हाँ, इनिशियल डेज में होता था कि भाई सुबह से शाम तक बैठे रहते थे, कोई आता नहीं था, तो उस समय में थोड़ा लगता था कि इतना इन्वेस्ट कर दिया है, कस्टमर नहीं है, इतना मतलब वो रिस्क कैलकुलेटिव होता है, तो वो उस समय में ऐसा लगता था। बाकी पर्टिकुलर ऐसा कोई मोमेंट नहीं है जो कि एकदम ये हो गया कि ऐसा कोई याद नहीं आ रहा है दीपक कि भाई ऐसा है। पर ऐसा मोमेंट आया है कि भाई यस आई विल डू इट, ये हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। किसी को हैंडल करना था जो नहीं बोलना चाहता हूँ अभी, तो वो इश्यू था कि दैट आई विल हैंडल, दैट इज नॉट एन इशू, ये ठीक है, दिस आई विल टेक केयर। एंड ऐसी बार बहुत बार हुआ है कि कोई बोलता था कि भाई ये क्या करेगा, ये तो अभी पढ़ा लिखा नहीं है, इतनी बड़ी दुकान ले ली, इसको तो बंद करके वापस KGF आना है। तो उस समय मैं मन में ही सोच लिया था कि भाई उसको तो रॉन्ग प्रूव करूंगा, और उसके बाद वही आके मेरे को पूछे कि यार इससे करेंगे तो कैसा रहेगा, उससे करेंगे तो कैसा रहेगा। दैट वाज द मोमेंट लाइक व्हिच आई एंजॉयड। एंड one more thing which I would like to share is like when we first came and we had a very small place for an exhibition, और मेरे बाजू में एक बहुत बड़ी, मेरे से 10 टाइम बड़ी दुकान थी एग्जीबिशन में, देयर आई वाज दिस मच। उस दिन मैं जाते जाते मेरे पूरे स्टाफ को बोल के गया, एक दिन इतना बड़ा स्टॉल करना है, and within 4 years I had bigger than them that year. That was my biggest moment where I enjoyed. Those are very big, उनसे भी बड़ा experience. Last question from my side. Then I will have a small request for you. Then we have a question and answer. This is one thing which I have seen, observed, experienced. Now they are in the college, they have teachers, then they will graduate to they'll have teachers. Then initially they might go to some other coaching centers, कुछ कर देते हैं. But what is the importance of learning? Maybe you have been in business for almost 30 years हो जाएगा आपको बिजनेस में. 30 साल के बाद में lot of people think, जब अपन डिस्कस भी करते हैं कि भाई क्या जरूरत है इसको सीखने का, तो is there a line
कि इसके आगे सीखने की जरूरत नहीं है. लाइक हाउ इन स्पोर्ट्स देयर आर कोचेस, हर जगह पे कोच होते हैं. बिजनेस में भी जैसे भी हम कर रहे हैं, यू आर डूइंग फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स, यू थिंक कोचिंग जरूरी है क्या, या ओनली फॉर सम टाइम चाहिए, या इट शुड बी ए पार्ट ऑफ योर लाइफ, कि देयर शुड बी ए टीचर, देयर शुड बी ए कोच थ्रू आउट योर लाइफ, और इट शुड ओनली कि जब प्रॉब्लम है लाइक ए डॉक्टर यू गो, यू डोंट नीड डॉक्टर हु कम डेली टू यू, बट यू डेफिनेटली नीड योगा टीचर हु कम टू यू डेली. तो या तो योगा टीचर का हेल्प लो, डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर योगा टीचर नहीं तो डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी. डॉक्टर कभी कभी आता है जब व्हेनेवर प्रॉब्लम होता है. तो इन बिजनेस में भी अगर किसी को ग्रो करना है, नॉन स्टॉप चलते रहना है, तो खुद ही कर सकता है क्या आदमी, क्या उसको दे शुड हैव सम कोच, सम टीचर, सम मेंटर, एज अ पर्सन बोलो, एज अ बिजनेसमैन बोलो, कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है दीपक, बिकॉज एवरीवेयर वी हैव सीन कि मैं आज 30 साल से ज्वेलरी बिजनेस में हूँ दीपक, बट आज भी मैं अगर दुकान जाऊंगा तो एक चीज नया सीखूंगा, उसमें कुछ ना कुछ रहेगा जो मेरे को पहले नहीं मालूम था. ऐसा नहीं है कि पूरा मालूम पड़ गया, तो वो मैं भी सीख रहा हूँ. तो मेरे में वो स्टूडेंट का एटीट्यूड रहना बहुत जरूरी है कि मैं उधर से सीखूंगा. कोच का इम्पोर्टेंस तो वो हर बार, मैं फर्स्ट बिजनेस एक्सीलेंसी किया था दीपक, तब यू स्पोक अबाउट सचिन तेंदुलकर. he is the best batsman in the world, but he also needs one coach. वो कोच जो बाहर से काम कर सकता है वो अंदर जाके नहीं कर सकता है, और वो तेंदुलकर खुद भी नहीं कर सकता है. तो ऐसे मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं आई एम द बेस्ट एट दैट प्लेस, आई हैव ऑल द नॉलेज एवरीथिंग, बट इन स्पाइट ऑफ दैट हाउ टू ग्रो, हाउ टू बिकम वेरी बिग इन लाइफ, और वो बिजनेस में कैसा बड़ा करना है, तो वो कांस्टेंट टच में रहने के बाद ही हो सकता है. एक बिजनेस कोच हो या फिर एक कोई मेंटर हो जिससे हम लोग whenever it is required, it happens कि भाई अभी वो हम उनके टच में है तो he knows about us. ऐसा नहीं है कि भाई मेरी हिस्ट्री मालूम नहीं है और मैं सडनली जाके पूछूं भाई ऐसा हो गया क्या करूं, तो वो उसके नजरिए से देखेगा, मेरे बैकग्राउंड से या फिर मैं जो इससे गुजर रहा हूं उसके नजरिए से नहीं देखेगा. तो यू आर इन टच विथ a constant, कोई भी मेंटर है या टीचर है या टू whomever you look up to, उनसे भी अगर कभी भी बात करते हो, who's your well wisher, तो उनसे भी बात करते रहेंगे तो फॉर श्योर वो जरूरी है बिजनेस में, बिकॉज अदरवाइज आफ्टर अ पॉइंट यू बिकम एरोगेंट. वो एक दिमाग में छड़ जाता है कि मैं कर लिया, मेरे पास 4 दुकानें हैं, मेरे पास वो है, मैंने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया. वो ग्राउंडेड भी रखता है, और उसको नंबर्स का किसी का, नॉट एवरीबडी इज एक्सपर्ट इन एवरीथिंग दीपक. मैं अगर बिजनेस कर सकता हूं तो सेल्स में मेरा एक्सपर्टीज रहेगा, या परचेस में रहेगा, या फिर अकाउंट्स में रहेगा, तो वो सब चीज के लिए बोलेगा कि भाई ऐसा कर सकते हैं. वो खाली वही नहीं, एनीथिंग इन दैट मैटर. बिजनेस में कोई कोच रहना, या फिर नॉट ओनली कोच, नॉर्मली आजकल तो बहुत ऐसे आ गए दीपक कि भाई हाउ टू प्लान, कि भाई किसको किधर लगाना है, कौन क्या कर सकता है. बाकी छोटी छोटी चीजें डिटेलिंग वो जो दे सकता है वो हम तो अभी वी आर गेटिंग यूज्ड टू इट. बहुत बार मैं बोलता हूँ दीपक कि भाई घर में या ऑफिस में कुछ 4 चीज ऐसे पड़ी है, मैं रोज आता हूँ मेरे को खराब नहीं लगती है, मेरे को लगता भी नहीं कि भी ऐसा है. नया आदमी आके देखता है, उसको लगता है अरे यार ये ऐसा है, वो ऐसा है, उसको लगता है, तो वो सोचने लगता है. तो वो बाहर से जो आता है वो ये सब चीज देख सकता है, अंदर रहने वाला नहीं देख सकता. तो मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरे को तो लग रहा है कि सही चल रहा है, बट बाहर से जो आके देखता है उसको लगता है कि ये सही नहीं है, ये बराबर है, इधर बराबर कर सकते हो इधर. तो वो एक हेल्प बहुत जरूरी है, और इट इज नॉट हेल्प, इट इज लाइक विन विन. आपने बोला है कि भाई उसको भी लगता है कि भाई ये राइट हो सकता है और इसमें ग्रोथ हो सकता है, और उसके लिए इसको इतना टाइम देने का जरूरत नहीं है कि भाई ही डजंट हैव टू डू ऑल थिंग्स. ही कैन प्लान बिग एंड ही कैन बिकम वेरी बिग इन लाइफ. Totally agree with whatever you say. What is that one thing you think has helped you to be such a good entrepreneur? आपके हिसाब से आपकी क्या सबसे खास बात है कि लगता है कि because of that you have reached where you are reaching? बिकॉज माई कॉन्फिडेंस है दीपक, मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस है. वो कॉन्फिडेंस ओवर अ टाइम ऑफ, बिकॉज इंग्लिश नहीं आना, एक कॉन्फिडेंस लेके चला हूँ. कभी
मेरे पास जब 2000 में व्हेन वी केम, वी वेर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के सामने रहते थे, तो उस समय वी स्टार्टेड, तो उधर से कोई कस्टमर आता था तो पहले डर लगता था कि अरे यार चला जाएगा, तो उस समय से नहीं था दीपक, 4 रख के भी 40 का बात करते थे। तो वो कॉन्फिडेंस है जो लाया है, तो वो कॉन्फिडेंस एक तो केजीएफ के लिए बोलूंगा दीपक, वो केजीएफ से आया है कॉन्फिडेंस। नहीं पढ़ते हुए भी सबको आज, हाँ ठीक है, बहुत सी बार ऐसा होता था कि भाई पीपल यूज टू स्पीक इन इंग्लिश एंड देन आई वुड rather telling excuse me, I would understand that, हाँ ठीक है इसने यही बोला रहेगा, तो वापस उसको जवाब दे देता था। Because I remember for lady girl who coming in the store and asking for a loo, where is your restroom? मैं बोले restroom I don't there, तो वो बिकॉज नहीं मालूम था, उधर से आया केजीएफ से आया, इंग्लिश नहीं आती थी, और वो यहाँ का एक्सेंट अलग था, सब था। देन ओवर ए पीरियड ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत था पहले से फॉर एनीथिंग कि वी विल डू इट, ये हो जाएगा। मतलब मैं वो 4 सेट रख के व्यापार कर लेते थे, तो वो कॉन्फिडेंस यहाँ तक लाया है। फैमिली का सपोर्ट था, फैमिली का एक सपोर्ट होना बहुत जरूरी है दीपक, तो फैमिली का सपोर्ट था। अभी सुनीता इधर है तो सुनीता का भी सपोर्ट था, एंड टीम अच्छी थी, और एवरी टाइम आई फेल्ट कि भाई इट इज फैमिली। टीम को कभी भी टीम जैसा, मतलब कुलीग को कुलीग जैसे या फिर उनको नीचा दिखा के कभी भी काम नहीं किया दीपक, वो मेरे में था ही नहीं। मैं जब केजीएफ में था तो भी नहीं था, इधर भी नहीं है कि मेरे साथ में जो है वो साथ में बैठ के खाना खाएंगे और हम लोग साथ में रहेंगे कि उनके साथ में ये क्या करना, वो एक चीज था। और कॉन्फिडेंस एक था, तो वो कॉन्फिडेंस आज इधर तक आया, तो वो कॉन्फिडेंस ही मेरे को इधर तक लाया दीपक। So I'm very confident enough to do things and do it. That what I have spoken about. Paji 700. अभी you have crossed 51 now, 52 now, 30 साल हो गए, सब सेट कर दिया, nothing to prove. अब what your life is there. और people think अभी क्या करना है, सब हो गया ना अभी। So आपका कंडीशन कैसा है? बस, या अभी तो इतना एक्सपीरियंस मिला है, गलतियां कर ली है, ये सब हो गया, अभी तो मैं एक्चुअली आसमान छू सकता हूँ। सो अगर तो व्हाट इज योर स्टेट ऑफ माइंड कि बस वो तो मैं होने दूंगा नहीं, तो चांस ही नहीं है। बट ये उम्र में, ये टाइम पे जब सब होने के बाद में ऐसा कोई एम्बिशन बचा नहीं है, घर हो गया, गाड़ी तो जैसे चाहिए तो वैसा हो गया। व्हाट ड्राइव्स यू नाउ? अभी थोड़ा फेम के लिए करते हैं देखो, थोड़ा फेम के लिए भी काम करते हैं कि अभी वो चाहिए, तो उसके लिए वो पैशन फुलफिल करने के लिए इधर पैसा चाहिए, जरूरी है, तो दैट इज टेकिंग मी। तो अभी 3 तारीख को, ये नहीं अगले महीने में 3rd को फर्स्ट फ्लोर का एक 2500 स्क्वायर फीट का एक शोरूम भी रेडी हो जाएगा दीपक, तो सिल्वर के लिए। पहले काम करो, फिर नाम आएगा, फिर बाद में नाम गाएगा। तो अभी काम हो गया, दाम हो गया, अभी नाम हो जाएगा। Okay, I think we are. I can go on talking because there's so much to talk, and I think somewhere we have to draw a line. ये लोग कब तक भी देखेंगे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, थक जाएंगे देख देख के। इतनी छोटी स्क्रीन में इतना बड़ा आदमी छोटी स्क्रीन में बड़ा ही दिखता है। If you have any questions from the audience, we will love to take it. Otherwise, I will wind it up the whole thing. Yes, Bhumika. I'm so happy that I can talk to you right now. So happy that I can talk to you right now. My question is actually that you have a family. The voice is animal to work with the family. So, what to talk about that in time starting off the road. And what is the biggest work? Also, तो आपको कैसे पॉसिबल है? प्लान बी लेके तो नहीं आया था,
प्लान ए में ही काम किया था, प्लान बी लेके ही नहीं आया। एंड आज कुछ काम करूंगा तो हो सकता है कि भाई प्लान बी के लिए भी सोचना पड़े, तो अलग बात है। बाकी उस समय मैं प्लान बी लेके ही नहीं आया था, उस समय में तो इसको ही जेड तक लेके जाऊंगा करके सोच के आया था। एंड विच आई हैव डन इट। So my first question is jewelry market. It's a very competitive market. And I would initially tell about brand name. How is it? I'm Indian market. I'm using the second facility when they're buying jewelry. They will see four and different codes on the how will you manage to hold on to that? When we are looking at sure. And how many years of effort and time did it take to use the pilot and teacher level and pass failure? So you don't do business without profits, that is for sure. It took me 2 years to make people understand what we stand for, because we have that where MP Swarnamal, where trust is tradition. So that is what. And we had taken over this store, which I am into, which was earlier also a jewelry store. There were customer, उनके भी थे थोड़े, तो मतलब वो बंद करने के स्टेज में थे. But when we took over, then we did that exhibition, small one. So we had to call customers there, and then we became specialized in one particular thing, where people for that they used to come there, and we had Telugu speaking customer both थे हमारे पास, and we are very good at speaking that particular language. People used to feel one. If we go here, we can like at least tell them what we want. All those things helped me there, and at the same time we had that one particular segment को ही target किया था. उसके बाद में we went for everybody, like कि बाद में हमने 3-4 कैश को, मतलब अभी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में हम लोग ने मास्टर कर लिया, उसके बाद में we went everywhere. So that took 2.5 years, that's it. So basically 2-2.5 साल घिसना पड़ता है, बाद में ऐसा बैठ सकता है, मतलब काम करना चाहिए. 3 साल का काम करना पड़ता है. 3 साल तो नॉन स्टॉप डिस्कशन काम करना पड़ता है. And you start with something, have a hold on it. Entry should be narrow. Once you master it, then you broaden the entire thing. That's how the whole thing happens. Straight away you go with multiple products, sometimes becomes very difficult to deal with it. Find something niche, find something exclusive, find something very specific. Start with that, have mastery over that, and then you spread around. So basically the strategy they used. Yes, Dhruv. Good morning. Been continuously for 3 months, being there out. And one thing I have really observed was most of the time I was in the shop itself. To the stage where you are today, because I've seen my family, my relatives, all of them talking about it. There is a jewelry that is in the buying, it's always supposed to go and be one man. So at this stage, where they are having today, it's very easy for you to remove the sit and your staff will go everything, and the shop will run automatically without you know who being there also. So you have to be there, but you always as I am you making sure that you fit with the customer because it's more like 5 minutes. So how do you manage the balance that I'm at this level, but still I will go down and talk to my customers and not have the arrogance. It was a source what I'm thinking about. But कुछ सोच में हम ये भूल जाते हैं कि हमारे साथ जो हमको बिजनेस दे रहे हैं उनको इम्पोर्टेंस देना. Most because I've seen many of them that एक स्टेज पहुंचे और हाँ चल रहा है जो भी देखेंगे. But you make sure you sit, if you're in the shop, you sit with the customer, give them time, give them that extra that you have. So how has your mind ever played with you that नहीं यार अब मैं एकदम शांत से बैठूंगा, कुछ करना नहीं है, या
how are you coping up with that? Even till today, like okay, ठीक है, first 3 years, 4 years, 5 years, until you're making the business, it's easy. But till today, if you're keeping it, how do you feel? What's that driving you? बस उनसे ही आया है उधर तक आने का, मतलब व्हाट आई एम टुडे इट इज बिकॉज ऑफ देम ओनली. और ज्वेलरी बिजनेस नॉर्मली ट्रस्ट पे चलता है. अगर ट्रस्ट आ जाए उसके ऊपर, 1 घंटा एक सेल्समैन काम करता है और मैं जाके बोलूं कि ये अच्छा है ले लो, वो ले लेगा बिकॉज ही ट्रस्ट मी. तो वो ट्रस्ट बिल्ड करते हैं पहले. वो ट्रस्ट बिल्ड करने के बाद में उनका कुछ पर्सनल एक्सपेक्टेशन भी रहता है कि भाई आप डायरेक्ट ओनर से मिल गए हो. बिकॉज अभी कभी भी कहीं पे भी जाते हैं, एक छोटे होटल में भी जाके खाना खाते हैं और फिर उसको मालिक आके पूछ लेता, तो हमको कैसा अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, उसने पूछ लिया हाउ आर यू और व्हाट एवर इट इज. तो ज्वेलरी लेने के लिए आ रहे हैं, मतलब छोटे मोटे आदमी आ ही नहीं रहा है. एवरीबडी हूएवर इज कमिंग, तो उनको जाके बात करना उनसे में अच्छा लगता है और उनको भी अच्छा लगता है. तो वो कंफर्ट फील करते हैं, तो फिर वो वापस आते हैं. और वो बैलेंस करने के लिए 2-3 चीज है. एक तो सुनीता है, वो बोलती रहती है, तो वो ये काम पक्का करता हूँ कि भाई आपको बैठना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा. और बहुत पहले दीपक का एक क्लास था जिसमें दीपक ने बोला कि मेरे मास्टर ने खाली ऐसे किया था, मेरे एक मैथ्स टीचर ने ऐसा करके, या मेरे स्पोर्ट्स टीचर ने मेरे हाथ पे कंधे पे हाथ रख लिया, तो मेरे को जो फील हुआ था. तो वो जाके अगर मैं कस्टमर को या मेरे स्टाफ को भी ऐसे करके उनके बाजू खड़ के उनसे बात करता हूँ, तो दोनों को अच्छा लगता है. He also feels happy. She is also very happy कि भाई he came only because of me to see, in spite of. अभी छोटा सा हुआ था दीपक, last 15 days ago only I got a message also. In spite of so many customers, you were here also and you were there also, and I liked it and I felt that I was very much with you only. So that was the feedback. And thank you for observing things. And it was very good having Dhruv also for 3 years. Thank you. Dhruv did 3 months internship with him when his son got married in Ramoji Rao Studios, Hyderabad. Bhumika, the answer is like when you don't give yourself an option, you will rise to the occasion. Yes, speak. Thank you for having this chat. What is this amazing opportunity you gave to us to learn? Thank you so much for that. And my question to you is, what about knowing about the man of gold and the heart of gold? And in business especially, so many times when somebody was gifted or somebody would have feedback for you in terms of business. Somebody also would have paid because of this situation maybe. Because a lot of businessmen, they have attitude. Nobody wants like you, and nobody wants to come in their comfort zone. But you give everybody the comfort zone, make everybody feel special, make everybody feel very loved. And what is that? Is that not right? To be like business. Nobody comes in a relationship. I would say that it's an amazing thing, but to have that heart, to have the heart for business is very crucial in their observing you. So what is that drives you and you build like this and it's over and over. First of all, thank you very much. Thank you. And फिदरत ही ऐसी है. My nature is like that. I cannot go and fight with anybody. मैं किसी के साथ अगर बाई चांस झगड़ा भी कर लेता हूँ तो उससे जाके नेक्स्ट डे हेलो बोल देता हूँ, मालूम नहीं पड़ता मेरे को. तो ऐसा मेरे साथ होता भी नहीं है. और कभी कभी हुआ है तो वन अकाउंट क्लियर, वो सोच के आगे बढ़ जाता हूँ बस. दैट इज व्हाट इज थिंग. बट अदरवाइज आई डोंट गो एंड टेक इट one account got clear. So I don't know for business how far it is right. I don't know for business how far it is right, but out of my learning, that is what drives me. कि ठीक है, one account clear. We work for it till the last thing. If it doesn't happen, then one account got clear. होता है बहुत बार ऐसा होता है. एक one incident दीपक, this I have already shared probably. One exhibition where we were having a stall and a big client who had come by a chartered flight from somewhere out in Bangalore, and then वो लोग यहाँ आके बहुत सारा माल लेके गए थे. They did everything, and somebody
came from the next stall, and they told these 4 or 5 items you send it. They have selected. There are their clients. So I had to send that 4 piece to them, and that was a big business. Probably 10 years ago, 10, 12 years ago, it was a big business for me at that time. And then that 4 pieces में मतलब मेरे को लगा कि भाई मेरा एग्जीबिशन का खर्चा निकल गया और उसके बाद भी कुछ अच्छा बच जाएगा, बिकॉज इतना बड़ा बिजनेस था उस समय के लिए वो. But it happened so in the evening, all the 4 set came to me back. And probably he might have given anything. I don't know about what happened, because that lady was very confident, sure, and she told कि ठीक है अभी दे देती हूँ पैसा. But then it happened कि भाई बाजू स्टॉल वाला ही तो है, वो बोलेगा कि लेके जाते हैं, no problem, आप भिजवा दो, and we will get it collected, cash, you can get it collected. They gave it back. At that day, everybody in the store told कि भाई how can they do this? वापस जाके दे दो. You go give them. I don't know, it's all right. क्या करेंगे अभी, वो बोल दिया, दे दिया, हो गया. झगड़ा करेंगे, ऐसा करेंगे, वो बोलेंगे, ये बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे. वो अपना नहीं था, नहीं गया, रख दो, खत्म हो गया. तो उस दिन कुछ भी नहीं बोला. और उसके बाद 4-5 साल के बाद ऐसा काम हुआ कि मेरा एक बहुत बड़ा काम उन लोगों ने किया. अगर मैं उस दिन उनके साथ झगड़ा कर लेता तो वो काम, बहुत बड़ा काम मेरा उनसे ही हुआ. बहुत बड़ा काम हुआ था, which was very big than that. तो वो करने से फायदा नहीं है करके मैं सोचता हूँ, और मेरी फितरत नहीं है, इसके लिए मैं करता भी नहीं हूँ. थैंक यू. Thank you so much. Time is flying. I think we could wind up here. Okay, last question. Will the last question of Tanish? Yes. Right. Hello. What are you sleeping till now? Keep the question short. Answer can be long. So, Chief, what is when we grow a business, we want to grow. Expansion का what happened? Creating another brand. But after every small month, it was only investment. What we have to expand करने के लिए I don't know another brand somewhere else. मुंबई या बैंगलोर में क्या? And gut feeling में कितना चलना चाहिए? Second question is gut feeling कितना चाहिए? गट फीलिंग के लिए तो नंबर 1 पूरा सेशन है उसके बारे में. तो we had started one more store in Jayanagar also. Then that came to my brother, and in fact I had planned for a store in Bombay also. I had planned a store in Bombay, and then probably my dad बोले क्या करेंगे, अभी इधर है, सब इधर है, because फैमिली से बहुत अटैच रहा हूँ. तो उस समय में डैड प्रॉब्ली वो राइट डिसीजन ही होगा उनके लिए. So I didn't go there because otherwise I would have missed Deepak. And you would have missed this interview. So that was the time when they told you can have. But we are doing it. We are doing it there. We are now expanding here also. And gut feeling में normally क्या होता है, वो gut feeling एक एक जगह काम चलता है. वन सिटिंग में मैंने वो स्टोर ले ली थी जयनगर वाली. वन सिटिंग इधर बैठ के खत्म करके, डील खत्म करके ले लिया. बहुत अच्छी चल रही है, चलती थी और चल भी रही है. तो वो गट फीलिंग तो कब आता है, जब थोड़ा सेटअप हो जाए उसके बाद में गट फीलिंग का काम करना था. दैट यू हैव टू वंस कम टू अ सेशन. एक दिन का पूरा सेशन था वो. थैंक यू. Thank you so much. Yes, quick one. Mike. No, it's the first interview, so I'm going a little liberal with the time. Next time it will be not. We'll have 12 to 1 interview and 1 to 1:30. We'll have question answers and we'll close by the time. क्या एडवाइस करोगे आप? उधर जाके क्या एडवाइस करोगे? अगर आपको 20 साल पहले जाके होना तो क्या एडवाइस? खुद को क्या एडवाइस करोगे आप? खुद को आज के मैच्योरिटी के हिसाब से क्या एडवाइस करेंगे बोल रहे हो? अच्छा. हाँ, तो राइट डिसीजन लिया है, वेरी गुड. तो और बड़ा करना चाहिए था. दैट इज व्हाट आई वुड. Thank you. Thank you.
I think it was all one of those. Everything is absolutely impromptu, extempore, and very candid. So thanks for being straight from the heart as always. So last couple of minutes, आपको इनके लिए कुछ बोलना रहेगा तो message for this age. Message for this age is like the foundation. Actually, Shamkit, my son, spoke on the dais on my life कि 6th में फेल हो गया, 8th में फेल हो गया, 10th में, वॉट एवर इट इज. उस समय में अगर इतने अच्छे टीचर मुझे मिल जाते तो मैं फेल नहीं होता था. और मेरे कॉम्पिटिटर कौन होते थे, वो कुछ नाम बोला, वो मेरे को नहीं मालूम. Elon Musk and Gates. So you have a very good coach, very good teacher, very good mentor, very good friend, everything. So don't miss this actually, where I will tell कि the best of the college we have here in Bangalore, और ये वाला कॉलेज है, ये वाले. और बिजनेस करने के लिए तो क्या है, थोड़ा फोकस्ड होना बहुत जरूरी है कि लाइफ में एक चीज के लिए मतलब काम करते हैं तो यू हैव टू वर्क फॉर दैट, वर्क फॉर दैट, वर्क फॉर दैट. हम लोग बोलते हैं एक्चुअली पेस्ट लगा के बैठना पड़ता है. और कुछ बोलते हैं वो नहीं बोलेंगे, लेकिन पेस्ट लगा के बैठना पड़ता है कि भी कुछ भी नहीं करेंगे, वो एक 3 साल के लिए पक्का करना होता है. और आज के लाइफ में एजुकेशन भी बहुत मस्ट है, बिकॉज टू कम हियर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट करके बोलते हैं दीपक. तो बट ठीक है, मैं नहीं पढ़ा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज से वंचित रह जाए. बिकॉज आजकल बहुत स्मार्ट लोग होते हैं कि भाई आप लोग फास्ट ग्रास्प कर लेते हैं. एनीथिंग इज टॉट टू यू, यू कैन ग्रास्प इट वेरी इजी. और फोकस्ड रहना बहुत जरूरी है लाइफ में. और जल्दी पैसा कमाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, वो एक चीज में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा. बिकॉज एवरीबडी वांट्स फास्ट मनी, which I personally think about. It is not so easy. You want money, that is for sure, but fast money का करने के बाद आदमी ठीक है, वो लक फेवर बोलते हैं या फिर वो कुछ हो जाता है, बात अलग है. बट फास्ट मनी नहीं होता है, मनी टाइमली ही आता है, तो उसके लिए काम करना पड़ता है. दैट यू हैव टू वर्क, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यू आर इन द राइट हैंड, सो यू विल वर्क. आई नो everybody is very focused also, so you can be focused, dedicated to the work which you are doing. and life में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, एक चीज के पीछे भागने से डायरेक्शन मिल जाता है. that is what is my thing. Thank you so much. Thank you for calling me here, Deepak. Thank you making me so special. For all of you on the online live, just remind you from EDP Masters this time with Mr. Sanjay MP from Entrepreneurial. And since you spoke about the money, and money is not easy to make, on behalf of the Kingdom College and Deepak Inspiration team, we want to give you paisa ka ped. So, so here we have money plant to you. Ladies and gentlemen, boys and girls, stay tuned with EDP Masters. Next Thursday, we'll have another beautiful, amazing entrepreneur. And all the people whom I'm going to call on this dais of EDP Masters is not going to be one of the only entrepreneurs, but somebody who is also an amazing human being, because the man behind the business is much more important than the businessman outside. So look forward to some amazing entrepreneurs, and we'll have some new set of people coming in. And stay tuned. I think it will be always, as of right now, on all the Thursdays. Only if I'm traveling, we'll do one day aage piche. So those of you are going to be a part of EDPs in terms of degree students and commerce students, and those of you want to be open for everybody. So as long as the exams are going to happen, till that time you can keep attending this programs and do that. Right. So thank you for giving such an amazing experience. कुछ बोलना है? नहीं. So thank you for, because nothing like offline. The kind of energy, the kind of synergy it happens, it's beautiful. So look forward for some amazing sessions of season 2 of EDP Masters with Deepak the Inspiration. Thank you so much, and you keep staying tuned. Thank you for joining online also. Bye bye. Thank you. Happy day. Love you so much.